Show me the TS file. Scroll down. Okay. Show me your Git once. Ma'am, actually, I have just upgraded up to the forget password, I think. I just want to see the Git. No? Okay. Can you tell me, Shubham, what is data binding? Actually, ma'am, I don't go through this. I was working on But data binding, so you have done, no? Like in your code. yeah, ma'am. I just don't read it. Okay, Ganesh, what is data binding? Component and the sorry. Okay. View. Open. Click on that master. Okay. Insert the master. Okay, no issue. And show me that reset password is working or not. Ma'am, research password is not working. It is showing 401 error, ma'am. Sure. Okay. Unauthorized. Open the console now. Yes. Ashwin, can you tell me the types of data binding? Hello. Yeah, types of data binding. Types of event binding, Mhm. property binding. Mhm. I remember only two, ma'am. No. Open console. No. 401 unauthorized token is not there. This is the token issue. Okay. Open that arrow, double arrow after memory. Double arrow is there. No? Up. In the line of console. Last two arrows are there, right? Open that one. Open application. Yeah, here. Now open that local storage. You guys have stored token in here, no? Oh, yes, sir. See, token is not there. Shubham. Yeah, ma'am. Okay, store the token in here. How I guess sir has told yesterday, no? Okay, find it out to store it in local storage, and here it should show token, and on the key side the token should show, and the value side that token which is generated. Okay. Okay. Yeah. Okay. You can stop sharing. Do it like before an out session. Okay. Okay. 10 minutes it will require. Okay. What's next? Vishal, you there? Vishal, you there? Yes, yes, sir. Yes. Yeah, share your screen. No? Visible, ma'am? It is visible. Yeah. See, yours also dashboard is not correct. Yeah, ma'am. That it's I think Search bar. search bar to do. Yeah. Okay. And तू पण ह्याच icons use केले mat icons. हो मॅम मॅट आयकॉनिक यूज केले. So you should have use images instead of this. Okay. Okay, ma'am.
And your menu button, okay. Undo notes, that's fine. Okay, profile. And everyone, what you need to do, no? See, okay. That lastly profile button is there, no? हाँ मैम. Over there. If you will click on that profile button, no, one mat menu should come. Okay, one menu button should come, and inside that one logout menu button, and write there logout. Okay. If you will click on Okay. that menu button, no, one toggle like one menu button should come, and go Okay. there on the original UI. Click on that profile. See, like this it is coming, no, but here we just want one button. Okay. Sign out button should be there. Some use sign out, some of you use logout. Okay. Okay ma'am. Yeah, this thing you do. Okay, and your reset password is working. Yes ma'am. Wait here. Let me see the dashboard again. Go there on your UI. Here icons you will change. Search bar you will change. Okay. Yeah. It labels reminders, notes, and okay. No issue. Reset is working fine. No, then no. Yes ma'am. Okay. You can stop. Coming ma'am. No, you can stop sharing. And your Git is updated. No ma'am, but do it right now. Okay, no issue. Ankita, you there? Yes, ma'am. Share your screen. Ma'am, in this, I was getting error like 401. In what? Reset password. That same token issue is there. Token is not there. You have to store that token in the local storage. Local storage in the backend you are like. Here only. See, go to that double arrow. As I said, no. Inside. Yes, you said this thing, but There, token is there or not? Open that one. First one. Okay, double zero. this one. Yeah, 42001. Here the token should be there. Okay, so to come the token here, you have to add it in login.ts file. Okay, these people have done this thing, I guess. I have also done yesterday. Sir told this thing. Show me your login.ts file. Login.ts. I think in backend sir said this thing. No. In the this like front end in the login.ts file, you have to add that local storage thing, whatever is there. Yeah, here you have to add after line number 31. Okay, ma'am. Okay, here you add that and then it will work. Now show your dashboard. And Vishal, what is observable? Ask you. Hello, Vishal, you there? Am I audible? Yes, sir. Yeah. Ankita, you tell me now what is observable. Ma'am, they are used to like when we are using in subscribe now. So, in Angular, why we use observable? sorry, ma'am. In Angular, why we use observables? To subscribe the things like in application which in which we are running that application now. So we used to like in YouTube we subscribe the things now like that only it will work. Okay. Yeah. See, your search bar is also why everyone is having same search bar. Ma'am, I tried it many times. Like it is like not coming. Inside, like from inside, you have taken it from Angular material. Yes, ma'am. That email one which we are taken in that registration page, na? That Yeah. only I have taken. Okay. Ashwin, you have done this search bar properly, no? Like it is coming. Yes, ma'am, but I have not take from Angular material. Then I just add that input tag and then with CSS.
Okay. Failed. So see, what you have to do now, Ankita, Yes, ma'am. here you are taking it directly from Angular material, correct? Yes, So you yes. have to change it from here. See now the class is like this mat form filled in. This one is the class, correct? Yes, ma'am. And they have given margin and padding. See this box inside this box. Yes, yes, yes. Margin and padding. So you have to use that ng dip condition. Okay? Okay. Yes. Inside this CSS, copy this class from here, paste it inside the CSS and use ngdip before that class and then try to change the height and width. It will work. ngdip have you used before? Yes, ma'am. Like this you have to do. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Try with this. If not happen, then we'll use the normal box. Okay? Yeah. Other things are fine, no issue. Don't use matte icons. Use images. Okay? Okay. Yeah, no issue. Thank you. Thank you. Payal, you there? Yes, ma'am. Sunil, you have almost completed. Share your screen, no, Payal. Yes, ma'am. Hello? Yeah, Sunil. Yeah. Yeah, ma'am. You have almost completed, no? Bookstore. Yeah, ma'am. All functionalities are what is pending for you? That quick part is also doing yesterday. Last week, sir. Hmm? Still it is remaining. Okay. Yeah, Payal. Today, sir will not Yes, be. ma'am. Mm-hmm. Okay. You have to increase the width of that search bar also, that text field also, Payal. Yes. Okay, ma'am. Okay. Yes. Now that part is okay, but see that icon of that background is also there, and the search you have to increase the width according to your background. Okay. Okay. Okay, ma'am. Click on that menu button. No, ma'am. Actually, मेनू नहीं किया मैंने. Why? मैम वो reset password में problem आ रही थी तो नहीं किया. So हुआ reset password. No, ma'am. Actually, 401 same issue. Same issue. Why you have? Yes. You have to add that token. Okay, only token part is pending for you. Yes, All of ma'am. you. Okay, then Okay. when are you going to do this? Before doubt session, you complete this part. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Your Git is updated. Yes, ma'am. Okay. You Ankita, you tell me now why we use angular.json file. Hello, Ankita. Hello. Yeah. Yes, ma'am. Angular.json. Sorry, not Ankita. Pile. I want to ask you to Pile. Yeah, Pile. Angular.json. Ma'am, for configuration to build development tools. And what is the difference between environment and environment.production.ts file? Ma'am, both are same. Both are configuration file and production. We are using production. Use production and that is the difference between TS and production file. Sorry. Ma'am, production tiers, when we use production tiers, then application will be in production mode. Okay. And production TS or production.ts, so it will be in production mode, and product environment.ts is in. Uh, Right now we are using what? Which file? Ma'am, environment tiers and On which mode we are using it? development mode. Okay. Yeah, your Git is updated. Yes, ma'am. Okay. You can stop sharing. Thank you. Do it, okay? Yes, ma'am. And have you given updates today? No, ma'am.
Give it right now, okay? Even if your UI is not proper, no, you have to give updates. Yes, yesterday, ma'am, I was update. Okay, no issue. Thank you. Okay, ma'am. Who is pending? Me. Ankit. Yeah, Ankit. Share your screen. Ankit, you tell me why we are using NG on in it? Uh, it's like to define the angular bindings, ma'am. Okay. And anything else? Uh, uh, when we initialize the directives or the components, so the data bound properties will be happen. So Okay. correct. Ganga, you there? Yes, ma'am. How many life cycle hooks are there? Ma'am? How many life cycle hooks are there? 3, ma'am. Sorry? 3. 3. Pratik, is she correct? Hello. Yeah. Yeah, is she? There are like no, ma'am. There are like many life cycles, 5 to 6, I think so. Okay, you are also not correct. She is also not correct. How many life cycle hooks are there? Anyone? Ma'am, 7, Eight, 7, eight, eight, ma'am. I'm 8. 7 or 8. 8. Okay. Okay. And can you tell me line by line, one by one, Ankit? Like constructor, Yeah. ng on changes, ng on init, ng do check. Yeah. Yesterday we used ng on destroy. Okay, where you have used? Show me. Ma'am, here, here, ma'am. Okay. So, ma'am, I haven't created the sidebar. I created only toolbar. अभी भी मतलब काफी सारा बाकी है. कल CSS और इसी में टाइम चले गया एंड वो रीसेट पासवर्ड के साथ. Your reset is working? नहीं मैम, आज करता हूँ उसे. That same सेम issue? सेम. हाँ हाँ. Okay. And okay. Are you guys sharing your code or something? I feel like you're sharing your code. नो मैम. बिकॉज एक तो 2 लोगों का सेम होता है, एक तो फिर बाकी 4 लोगों का सेम होता है. No, ma'am, my search bar it's different. बिकॉज अभी पायल का देखा और आप उसके बाद आपका देखा तो सेम ही यूआई दिख रहा है इधर. हाँ, उसका सर्च बार का इशू आ रहा था तो मैंने उससे बताया था कि कैसे यूज करना. Okay. ये ऊपर चिपक रहा था उसका. Okay. Complete it before the out session, okay, Ankit? This हाँ, one also and that reset password also. हाँ. Yeah. Okay. No issue. You can stop sharing. Okay. Sandeepan, you there? Yes, ma'am. Interpolation. What is interpolation, Sandeep? We can bind the data with the help of interpolation. Which kind of data are binding in that interpolation? Which type means? Madhubala, you there? Hello, Madhubala? Priyanka? Yes, ma'am. Hello. Yeah. Tell me about decorators, no? Madhubala?
In this Angular decorators is input decorator, output decorators, ng model decorators, component decorators, injectable decorators. Tell me the definition, proper definition of decorators. Like metadata. Metadata is represented by decorators, right? So tell me what is metadata. Mm. If do you know, then say yes. If you don't know, then just say you don't know. Okay. Metadata in this store class methods and properties in decorators. Okay. Okay. Priyanka, types of decorators. Yes. Hello. Yeah, types of decorator. Structural decorators, attribute decorators. No. No. Sorry. Class decorator, method decorator, parameter, and what parameter and property decorators. Okay. Pratik, share your screen. Yes, ma'am. Yeah. Manisha and Sandeepan, sorry for delay. That links, like yesterday I was on leave, so let's share those links with you. No problem. Today morning I did, I guess. No? Yes, ma'am. Yeah. I got the link. I show. Sandeepan, you? Yeah, I also know. Yeah, Pratik, what you have done? Ma'am. That note part and this display part I have done, ma'am. This one is the hard coded. Yes, ma'am. Okay. So this take a note part is working. What else is working for you? Like what you have done actually? Ma'am, only that close button functionality I have done, and that API What you have for used? part for that note. Um, status. Only this much I've done, ma'am. Why? And that What? No, not gate API. like uh, Hello? and that gate. Huh? Yeah, get all not API. Ma'am, I've tried that gate service that you have. But how to means I'm not able to how the process works. I don't know. Show me HTTP service. Yes. That gate service you have said I've created. URL token, this one, client, get password. Okay. Okay, huh. Now show me that user service again, node service again. Node service. Yeah, ma'am. Then I have created that gate node data. Okay. Okay. Scroll up at the top. There. Yes, ma'am. Hmm. In constructor, I have added is a token. Okay, now show me that method, get nodes method. Have you created that get node that I ask you to create one component, no? Get node component. Where is it? Gate node component. No. Yeah, you're calling that selector of Get display all and node component. get all node. Yeah. Get all node. Get all. Yes, ma'am. All node tab created. Then that get all node method in this. Okay. And show me the all nodes HTML. All node HTML. Okay. Yeah,
App note and app display note. Okay, show me that get all note TS again. Notes should come Get no? notice. Properly. Yeah. All notes TS. Huh. So here no, like you are hitting the API correctly, no issue. But what you have to do, no? Hmm. Everything I'll show you. You have to store all the nodes inside one array. Okay? So, ma'am, where I have to create it? In this only I have to create the array. Wait. But array What? part I have not written. See, no. After this, what you have to do? Wait. I'll show you. You have to take one variable. Okay? And inside that variable, what you have to do, you Where, have to ma'am? store all the arrays. Okay? Wait. Let me see that in your screen. Okay. Here, no. After line number 19, no. What you have to do, you have to take one variable. Okay. After line number Okay. 19. Okay. In that, like, one variable you are going to take, and inside that you have to print those nodes. Okay, those nodes you have to print and you have to store those nodes in that array. Okay, so what you will do, that response will come. Okay, response.data you have to do. Okay, what's on line number 19, enter. No, on line number 19. Yeah, here what you do, take one variable, this dot nodes array or something, after line number 20, like after that console response, enter this dot nodes array. Nodes array, anything you can take, whatever name you want to take. Nodes array is equals to is equals to response dot data. Okay, now this nodes array is there. No, declare it inside the class. Go up, declare it inside the class. This nodes array is equals to any on line number 10. Same, same I have to copy in line number 10. How you declare the variables inside that class? Colon any. Hmm. Do little bit fast, no, Pratik. Ma'am, what I have to do? Note array. How you like declare variables inside the class? You don't know that thing. Colon any. Use colon any. Hello, colon Inside any. colon I have to write. After that, no. After that, array give colon any. Here. Yeah. Now save and check once that array is coming inside that nodes array or not. Here. See line number 21. See line number 21. Open that data. Go open that data. That data is there now. Array is coming. Hmm. 18 nodes are there, no? Successfully. Yes, ma'am. Okay. So your get on node API is hitting. Yes, ma'am. Hmm. Now you have to display whatever nodes are there, no, that you have to display.
Okay. Hmm. Okay, you can stop sharing. I guess data sharing part is pending for you. Data sharing part is Okay. pending for you. Yeah, ma'am. Okay, can stop sharing. Yeah, Harshvardhan, share your screen. I was traveling. I will work from home today again. I took a leave. I was taken a leave yesterday. Yesterday. Huh. Okay. I sent you mail. Huh? Mail also I have sent. Okay, okay. I saw, I guess. I No will issue. work from today too. What? So what you have completed up to yesterday? This icons part was done up to Saturday. I have told you no icons part. From Saturday I am traveling. Okay. Okay, then continue working on the next thing. Okay. Yeah, I will start today. I will Yeah. complete it by today. And Ganga, you also joined through mobile, right? What is the Yes, issue? ma'am. Um, at engagement, Sorry. engagement shopping. Okay, so like connect at 4 and show me. Okay, Okay. what you have done. Yeah. Who is pending then? Sandeepan and Manisha. Links to I have shared you this morning, right? So you didn't do the work, both of you. Okay. So you're going to work today, right? I think Manisha will not work today. She has joining, no? She. Tomorrow is joining. Okay. Sandeepan, what about you? Testing is done. Testing to you have completed. So आज आपने लिंक शेयर किए तो वो कर दो. सिर्फ वो SSR ही बचा हुआ है ना आपके लिए, संदीपन? हाँ. हाँ. Three links I have shared this morning. You start working on that. No issue. Okay. Okay. Yeah. And give updates on time. Okay. Okay. Yeah. So who is pending? Priyanka. Priyanka, you there? Yes, ma'am. Yeah. Hello. Yeah. You're audible. Hello, ma'am. Yeah. Screen दिख रहा है ना? No, it is not visible. अभी मैम? No, still not visible. किसी को भी नहीं दिखा. No, it's not visible, I guess. Anyone? Her screen is visible? No, ma'am. Hello, ma'am. Now? No, still not visible. यहाँ पे तो शो कर रहा है. It's okay. Okay, fine, no issue. क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है उतना बता दो. UI और API का हुआ है, लेकिन UI ना मैम मेरा वो थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है. रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का पेज स्टार्ट. हाँ, वो UI ना मतलब ऐसा
जैसा हमारा लॉगिन पेज कैसे इसमें फंडो नोट्स में दिख रहा था ना, वैसा वो नहीं दिख रहा है। मतलब जो हमारा हम ये फॉर्म फील्ड से लेते हैं ना, हाँ हाँ, मतलब जो बॉक्स आ रहा है ना, नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड से करना है। हाँ यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड से करना है, थोड़ा अलग है ना वो फंडू से। हाँ, फर्स्ट लेकिन मैं वो बॉक्स में बोल रही हूँ, मतलब जो ईमेल पासवर्ड हम डालते हैं ना, वो वाला बॉक्स है ना, वो हाँ, क्या मैं भी मतलब, उसी की बात कर रही हूँ। सॉरी मैम। हाँ, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे आप? ओके, नो इशू ना, 3 बजे कनेक्ट करो तो बताती हूँ। ठीक है मैम। ओके, मधुबाला, शेयर योर स्क्रीन। Hello, Yeah, ma'am. yes, yes, you're ready. Okay, so what you have completed? It's done. API itore dono. Show this, ma'am. Hello, ma'am. Yeah, okay. Yeah. Open that arrow. रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज किधर है? हाँ मैम, वो मैसेज ये नहीं तो आया सिर्फ है। बाइंड हुआ है। हाँ, बाइंड हो रहा है, वही कल भी बताया था हाँ, सबको, मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आ रहा है। तो फिर एपीआई हिट नहीं हो रहा है ना? हाँ, सिर्फ मेरा डेटा बाइंड हो रहा है मैम। फिर चेक किया आपने क्यों नहीं हो रहा है? हाँ मैम, चेक किया। शो मी कोड, शो मी योर कोड। लॉगिन का क्यों है? रजिस्ट्रेशन का दिखाओ पहले। इसमें एक ही के अंदर लिया हुआ है सब कुछ। ओके, सर्विस सर्विस। ओके, आपने किया हुआ है ना फंडू का, आप इसमें चेक करो। ओके, क्यों नहीं हो रहा है? इवनिंग तक वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल वाला मैसेज बताओ, और लॉगिन सक्सेसफुल वाला भी। यस मैम। ओके, सर्च करो, नहीं हुआ तो फिर देखते, बट उसके पहले आप देखो। ओके ओके मैम, ओके। कंपेयर कर सकते हो उसको? हाँ, वो कंपेयर कर सकते हो उस वाले हाँ, पेज उसके रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज को कंपैरिजन करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम रिया तो फिर आपको डाउट सेशन देती सारा जो रिक्वायर्ड डेटा होता है ना, वो अलग होता है। यहाँ पे वहाँ पे भी, यहाँ पे वहाँ पे अलग सा डेटा है, और यहाँ पे अलग सा डेटा है। करेक्ट? हाँ हाँ। ओके, सो स्वैगर में चेक करते जाओ। ओके। वो ओके, सर्विस एंड क्या है? आज वो ही मोटर सर्विस सर्विस क्या है वो? लाइन नंबर 71 सर्विस जी नहीं है। सर ये शायद है ना बुक स्टोर के स्वैगर में। हाँ सर। नहीं, सर्विस किधर है? $71 रिमूव करो। सुनील, मैंने 2 लिंक्स भेजे आपको। हेलो हाँ सर, सुनील। चेक चेक हाँ, तो वो गो थ्रू करो उससे। उससे आप ऑथेंटिकेशन गार्ड कर सकते हो उससे। ठीक है? हाँ हाँ, ओके।
मधुबाला आपने वैलिडेशन से क्यों किए, कहाँ से कॉपी किया आपने वो पैटर्न्स वगैरह? सर वो वैलिडेशन के लिंक से लिया है सर। ठीक है, जितना वैलिडेशन से उस तरह से आपका वहां पे इनपुट होनी चाहिए, आपके इनपुट उस तरह से नहीं है, फॉर्म वैलिड नहीं हो रहा है, इसीलिए एपीआई कॉल नहीं हो रहा है। वैलिडेशन तो सर पहले ही किया था मैंने, प्रॉपर था सर वैलिडेशन। वो रेड कलर में क्या दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सा वाला सर? ये नीचे वाला? हाँ। तो वो नेम दिए सर मैंने वहां पे, ईमेल रिक्वायर्ड, नेम कब आता है रिक्वायर्ड। वो, कब आता है? जब अपन भरते नहीं है तब आता है वो। ठीक है, भरो फिर, अभी भरो एक बार बेटा। फर्स्ट वाला क्यों नहीं जा रहा है, वो नेम रेड रेड में क्यों दिख रहा है फर्स्ट वाला? स्पेस रिक्वायर्ड है ना? ईमेल वाला गया है सर उस। फर्स्ट वाला क्यों नहीं गया पूछ रहा मैं। मिनट सर देखती हूँ, एक मिनट। क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है फर्स्ट के लिए? नेम इज रिक्वायर्ड। क्या? नेम इज रिक्वायर्ड सर। नेम इज रिक्वायर्ड, हाँ फिर वो रेड में क्यों दिख रहा है वो पूछ रहा मैं। वो जाना चाहिए ना, अभी बेसिक पासवर्ड एंड ईमेल आईडी का कैसे वो रिमूव हुआ? स्पेस और फिर आपका सरनेम दो। शायद मिडिल नेम भी चाहिए। दिखाओ कोड। फर्स्ट नेम लेटर कैपिटल। आपने कोड किया है, आपको पता नहीं क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे? सर वही नेम रिक्वायरमेंट मेरा मतलब मैंने देखा था तब चले गया था सर वो। मैं जब फिल करके देख रही थी ना सर तब चले गया था। कौन फील कर रहा है? थोड़ी करे, हमने थोड़ी कोड चेंज किया आपका। हाँ सर, अभी अभी नहीं जा रहा है वो। ईमेल्स का उसका जा रहा है सर, पर उसका ही नहीं जा रहा है। फिर से कॉपी कर रहे हो ना आप? नहीं नहीं सर, पूरा मन से किया है सर। आप पूछ सकते हो कुछ भी। सर देखो मोबाइल का भी जा रहा है, उसके का ही नहीं जा रहा है। हाँ फिर वही पूछ रहा मैं कि क्यों नहीं जा रहा। हाँ सर, यहाँ पे भी मैंने फुल सबका सेम ही दिया है सर, फुल नेम। आउटलाइन एरर, नेम इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी। ठीक है, कंटिन्यू करो। यस सर।
वेस्ट करते हो बहुत सारा. या सर. नेक्स्ट करो नेक्स्ट. ओके सर. ओके. रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, अभी लॉगिन होगा कि उससे? नहीं सर, वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन नहीं बता रहा है, सिर्फ डेटा बाइंड हो रहा है सर. ओके, तो एपीआई कॉल करना है आपको. ये कब बताया था मैंने? फ्राइडे को, राइट? हाँ सर. फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, 3 दिन हो गए आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर नहीं पाए. हाँ सर, फ्राइडे को ये डिजाइन किया था सर पार्ट, फ्राइडे को डिजाइन पार्ट बोला था, फिर उसके बाद में डेटा बाइंड किया तो वो सही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली नहीं बता रहा है एपीआई. टोटली 3 दिन हो गए ना कल तक. हाँ सर. ठीक है. ओके, लॉगिन देखो. एपीआई कॉल नहीं हो रहा है. हाँ सर, एपीआई नहीं कॉल हो रहा है. ठीक है, तो देखो क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है. ओके. हाँ सर. ओके सर. एरर्स लेके आओ, माधुरी एरर्स रिजॉल्व करेगी, आपका यस post सर. करके नहीं देगी अब. ओके. ओके सर. जो भी है आपका इश्यू बताओगे आप, ये हो रहा है तो क्या करना है, तो जस्ट बता देगी आपको कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो. ओके सर. ओके. ठीक है. इतना ही बनाया क्या? हाँ सर. इतने 3 दिन से इतना ही बनाया? यस सर. आप तो बोले 10 घंटे काम करते हो, फिर 10 घंटों में 10 10 10 30 घंटों में इतना ही काम हुआ? अभी मतलब सब भी ट्राई कर रही हूँ सर, नया नया सब देख के करना पड़ रहा है, मतलब क्या वो ट्राई कर रहे हो? मटेरियल्स पे और पे ढूंढ के करना पड़ रहा है सर, इसलिए टाइम जा रहा है. हाँ, लेकिन वो उनके भी किया तो ये 30 घंटे का काम है क्या? आप ये बताओ मुझे. नहीं सर. फिर वैभव ये कितने दिन में कर सकते हैं इतना? वैभव सर एक ही दिन में कर सकते. कितना? एक ही दिन में कर सकते. राइट. एक दिन का काम है मुझे वाला. आप वहां पे 20 घंटे वेस्ट किए. एक तो आप झूठ बोल रहे हो, आप 10 घंटा काम नहीं करते. ओके. पहले जैसा शाम को या सुबह थोड़ा थोड़ा करते होगे, नहीं तो इतना मतलब इतना लेट नहीं होते कभी. मैंने पहले भी बोला आपको कि आपको बहुत टाइम देने की जरूरत है. टाइम देना आपको इम्पोर्टेंट हो. यू हैव टू गिव द टाइम. विदाउट ये सीख पाना, मतलब आप तो एक तो आपका ब्रांच अलग है, तो आपको कितना क्यूरियोसिटी होना चाहिए इसके बारे में. आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए. फोकस नहीं करोगे तो नहीं होगा ये. कंपनी में ऐसे नहीं चलता. अभी सीख रहे हो तो इसीलिए बोल रहा कि मैं आप ज्यादा टाइम दोगे. टाइम नहीं दोगे कि नहीं, फिर ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए. ओके सर. ठीक है. देखो आप क्या, पता नहीं अभी आप खुद से कितना लॉयल हो पता नहीं. आप बोलते हो ज्यादा टाइम देते हो, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि दे रहे हो. अगर देते तो ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते. अगर टाइम देते होगे तो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है. हाँ, कोई भी होगा, मैं भी होगा तो 10 मिनट के लिए भी आ गए ऑनलाइन तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ जो प्रॉब्लम है अपना हुआ. अगर आप वो ढूंढते नहीं तो फिर जस्ट लैपटॉप के सामने बैठ के कुछ मतलब जो भी करते हो वो कोई काम का नहीं होगा. अगर आप ढूंढते फोकस नहीं कर पा रहे हो तो इसका कोई मतलब ही नहीं. फिर यू कैन स्टॉप प्रेजेंटेशन वाला. यस सर. ये पे इंटीग्रेशन करो. एंड जो बुक स्टोर का मेन पेज है, होम पेज, वो डिजाइन करो. ओके सर. पर डिजाइन, होम पेज का डिजाइन भी होना चाहिए. ओके सर. ओके. यस सर. फोकस करो. 10 11 घंटे बैठो तभी होगा ये. मुझे वाला आपका ब्रांच अलग है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो. कंप्यूटर नहीं, वाला ब्रांच अलग. सीएसई है सीएससी ब्रांच. आपका. हाँ सर.
ओके, फिर किसका अलग था? प्रियंका का अलग था क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है मधु वाला दिन। आपको तो थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, फिर आपको ये यस सर। सबसे पहले ही पता होगा ये सब प्रोग्रामिंग नहीं सर, वगैरह। एंगुलर तो नहीं पता है पहले से। एंगुलर छोड़ दो, प्रोग्रामिंग पता है ना आपको? हाँ एंगुलर हाँ सर। नहीं होता कुछ, हाँ सर। सब लैंग्वेज में सब एक जैसा ही होता है, सब सिर्फ सिंटैक्स अलग होते हैं, सिंटैक्स सिंटैक्स। अलग रहता है। हाँ सर। देन फिर भी आप खुद से करो, ठीक है। प्रियंका शेयर्स की। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हेलो प्रियंका, हाँ सर, विजिबल। आप शेयर करोगे तो दिखेगा ना। हाँ शेयर है सर यहाँ से। हेलो हेलो। ठीक है, डोंट शेयर, नहीं हो रहा है। वैभव, वैभव का चेक है माधुरी? सिर्फ वैभव भी बचा है Okay. सबको पे। अलाइनमेंट प्रॉपर करो वैभव ये। यस सर। क्या यूज किया ये स्वैप करने के लिए? क्या सर? स्वैप करने के लिए, ओके। वहाँ पे 2 बार कॉल हो रहा है क्या वो? हाँ सर, ये एपीआई कॉल तो हो रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, प्री फ्लाइट है वो, ठीक है चलेगा, प्री फ्लाइट का कोई इशू नहीं होता। फर्स्ट वाला ओपन करो, फर्स्ट वाला। हाँ ये यहाँ पे देखो क्या है, अनडिफाइंड। उससे वो अनडिफाइंड दिख रहा है जो भी भेजा है आपने वो, और ऑलरेडी ऑलरेडी सर ये किया है ना पहले, इसलिए। ओके, तो लॉगिन करके दिखाओ, लॉगिन। हाँ वो अलग दिखता है, ये अलग क्यों? ये अच्छे से दिख रहा है लॉगिन वाला, साइन अप क्यों नहीं अच्छा दिख रहा है? सर, वो थोड़ा ये करना है बाकी उसमें। अलाइनमेंट प्रॉपर प्रॉपर करना है। हाँ, पोस्ट वाला ओपन करो। एक प्री फ्लाइट होता है, वेरीफाई योर अकाउंट। ओके, आपको ईमेल आया है क्या? ईमेल आया है सर इसमें। किधर है वो ईमेल? ओपन करो ईमेल। फिर वेरीफाई क्यों नहीं किया आपने? एक्टिवेट किया था सर वहाँ से मैंने। फिर भी नहीं हुआ ना? कैसे किया था एक्टिवेट? आपने क्लिक किया था सिर्फ वहाँ पे? हाँ सर, क्लिक किया था सर। है ना, उससे वो टोकन कॉपी करना होता है, क्लिक करो उस पे। हाँ, अभी ये जो टोकन दिख रहा है क्या वेरिफिकेशन का, आगे देखो यूआरएल में देखो। हाँ हाँ हाँ, वो कॉपी करो लास्ट तक वहां से। स्वैगर ओपन करो। यहाँ पे वेरिफिकेशन करके है वो देखो। हाँ, लॉगिन के बाद होगा, यूजर में रजिस्ट्रेशन के बाद। हाँ, यहाँ पे टोकन पेस्ट करो जो कॉपी किया है वो। ट्राई इट आउट करो, ट्राई इट आउट इधर राइट साइड में। हाँ, अभी इसके अंदर टोकन पेस्ट करो, अभी एग्जीक्यूट करो। वेरीफाइड सक्सेसफुल। ओके, अभी लॉगिन करो अपने बुक स्टोर से। हाँ ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रिमूव भी होना चाहिए, ठीक है वैभव? यस सर, यस। फील्ड्स एम्प्टी होने चाहिए आफ्टर द लॉगिन।
लॉगिन सक्सेसफुल। रिजल्ट ओपन करो, वो रिजल्ट के अंदर देखो क्या है। ओके, एक्सेस टोकन। ये एक्सेस टोकन जो है ये होता है अपना टोकन, जैसे आपने फंडो में यूज किया था ना टोकन करके, हाँ सर, करके ये आपको एक्सेस टोकन जो है रिजल्ट डॉट एक्सेस टोकन, ये आपको लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रखना है यहाँ पर भी। ओके सर। ओके, लॉगिन के बाद। ओके सर। ओके, एंड आफ्टर द लॉगिन यू हैव टू रिडायरेक्ट ऑन होम पेज, मतलब कि डैशबोर्ड में। अभी बुक स्टोर का डैशबोर्ड डिजाइन करो। अभी 3 दिन से आपको आगे वाला नहीं किया कि आपने डैशबोर्ड किया है, यहाँ तक किया है, कितना किया है? टूल बार किया है, अभी उसका बाकी। फुटर भी करो, एंड देन वहां पे जो बुक्स है ना मिडल वाले, वो एपीआई कॉल करके यहाँ पे प्रिंट कर दो। अभी हो गया आपका तो। ओके सर। ठीक है, फुटर बनाओ अच्छे से, एंड कॉपी मत करो। आड़ा टेढ़ा चलेगा मुझे नहीं सर, कॉपी लेकिन एक सिंगल लाइन भी कॉपी मत करो। ठीक है वैभव, अभी लास्ट चांस दे रहा मैं अभी। नहीं सर, कॉपी कर लेंगे। ओके, थोड़ा इधर उधर चलेगा, नो प्रॉब्लम। यस सर। ओके, बट कॉपी मत करो। ओके ओके ठीक है। अब प्रियंका, आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट निकालो एंड ग्रुप में डाल दो आपके यूआई के। अभी जैसे प्रियंका को बोल रहा हूँ। हेलो प्रियंका, यू देयर प्रियंका? हेलो प्रियंका, ठीक है। हेलो प्रियंका, माधुरी, आई एम ऑडिबल? Yes, you are audible. ओके ओके, ठीक है। तो व्हाट अबाउट 162 एंड 163 बैच? They have completed design of dashboard. Okay, then? Yeah, up to then. And reset also they have completed. Reset is done? Yeah, for Pile that menu button is incomplete for Pile. Menu button. That side nav part is pending. Okay. Others have completed. Already है ना वहाँ पे? Angular material में ना? हाँ, वो नहीं यूज कर रही क्या? हाँ, वो मतलब उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया अभी तक साइड nav पर. Okay. ठीक है। Others have completed the design of dashboard. ठीक है, तो उनको वो क्रिएट नोट का API कॉल करने के लिए बोला है। क्रिएट नोट वो नहीं एक्सप्लेन किया अभी तक। नहीं किया है, नहीं किया? नहीं अभी तक नहीं किए। नहीं ना। 163 Okay, screen is visible, guys. Hello. Yes. Hello sir. हेलो। हाँ बोलो ना। या वो प्रतीक हर्षवर्धन एंड गंगा उनका क्या है सर डेटा शेयरिंग पर। ओके डेटा शेयरिंग पार्ट पाते हैं आपका, ठीक है। एपीआई हिट किया हुआ है उसका, क्रिएट नोट का और गेट ऑल नोट का, और शायद हर्षवर्धन और गंगा लैग कर रहे दोनों। ओके, गंगा एंड हर्षवर्धन। Yeah. With API integration is done for create note and get all notes. Both of you? Yes, sir. Not for you, Mr. Ganga. What about Ganga? Hello, Ganga. She left the meeting, I guess. Why? No, she's there. Hello, Ganga. Harshvardhan. Yes, ma'am. API integration for create note and get all notes done, Harshvardhan? For create note done, sir. For get all notes, I will do today because I was traveling.
That's why it was not So possible. getallnote is pending. Okay, fine. Yeah. And Ganga, what about you? Okay. Just ping one to one, Madhuri. Okay. Today I will take for both of batches for Harshvardhan, means that web app and reverse teacher as well. Okay. Okay. So login registration is done. Okay. So we are the component for home and home component. Okay. Now, first I will explain what are the names of that my components. Okay, which component and what is the name of that component. Okay, so see, this top toolbar. Okay, this is the side now. Okay, this is the home component for me. Okay, this whole thing. Okay, first of all, what we have to do, create first one component name should be the dashboard home. Okay, see, first component is name of dashboard or home or toolbar header footer. Okay, so instead of that header footer, just do the home or dashboard name. Okay, second one, when I click on, see, on click on notes, it is showing the home. Okay, when I click on reminders, it is showing here reminders. When I click on here trash, it's showing the trash. Okay, when I click on notes, okay, so this notes, no, when we click on this note, we have to get the all notes. Okay, so create one more component as a get all notes or notes. Okay, or get notes. I will create here get all notes. Okay, so second component is created. That means we have to consider these two things in the get all notes. This is the get all notes component. Whatever I selected, this is the get all note. Okay. Second one. This is a take note. Okay. This one. So create note or take note. You can create a take note or create note component for that. So we'll create here. Create note. Okay. Then third one, this note. Okay, so this single notes only. Okay, so we call here display note or card or anything. Okay, so I will create name of that component in display. Display notes. How many components I have created? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 components. So this totally one is home component. Okay, or dashboard. Second one is just only for this get all notes component. Third one is create note or take a note component. And fourth one is this particular notes component, so display component. Now one more component is required there. When I just hover on there, it is showing these 6 icons. Okay, also that icons are here as well. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so I will create one more component here, icons component, note icons component. Okay, or actions component. You can create actions, give the name actions or note icons component. So I will create here icons component.
Okay, so here what is starting here? And where is the material? Okay, so as a like you, I'm copying that all things, whatever you did in the home component. This is my dashboard component. Okay, so before that, okay, so first of all, I have to show that routing part as well here. Okay, so for part, so for the component, home component for me currently. Okay, so we can check with this. So yeah. So home works. Home component is working. This is just showing there. Okay. Now I will place there. Copy. Just remove this ng should run. Is not required there. Now some requirements in the TS file. Just copy this things from TS file as well. Whatever is required, that is just only that things you have to copy. Okay. The internal part of this is to in the destroy, constructor, and mobile query. Okay, so now check what is the error there. Okay, these are the errors now. So I need to input whatever things are there. First of all, slide now. Okay, now toolbar module. Okay, or can require a mat now list. So mat list module, list list module. Then it's done. Okay. So I think from your side it is looking like this same, right? All of you. Hello. Yes, sir. Yes, Am I sir. audible? At the starting. Yes. Okay. So I will remove that whatever is not required things there. Okay. And the home HTML. Okay. Here. Now
It is showing this multiple times, so I will remove this on G4 from here. It is required is notes. So this notes reminders is required. Reminder labels. Value. Dash. यहाँ पे वो क्या क्या किया आपने आप लोगों ने यहाँ पे बीट देते हो ना, कैसे देते हो? हेलो, Yes, sir. so we print out this one. Let's check how it is looking now. Oh, okay. So we need something here. Do something. Okay. So then we will remove here. Okay, this something is printing there. So and we need to increase the width means height of this something. Okay. So when we are using there, I think already know you know about this router outlet. We have to use their router outlet. So I've done this thing. Our router outlet 163 batch. Are you using here router outlet in site now content? Hello? No? Yes. No, sir. No, sir. Okay. So why it is we are using there? I will show you. Okay. Currently, what we have to do, can check here. See, we have to show multiple components at a time. So there is a child and parent routing is there. Okay. Child and parent routing means in the home component we have to show another one. Okay. So we call here children. Okay. Make the array. In the array, we can make small parts. Parts. Note. Notes. Comma. And which component we have to load here? Get all notes. Okay. Now it will show get all notes on the browser. Oh. Why it is showing at the top? Let's start HTML. And now there is okay. Yes. Now we have to give that notes path there. Okay. See. Now it is showing this one. This get all notes works means where is it is in the get all notes. Okay. So structure is like first of all, this totally is the home component. Okay. Home component up to the here it is showing this home component. Now what I have to do, I have to show some childs inside the this component using the
this using router outlet. Okay, so whenever we put this router outlet anywhere, we have to give the routing for that. If we give this routing part, then it will work, otherwise it will not work. So see, inside this home path, we are added children routing here only for home path. It will not be accessible outside the home without home, these nodes. Okay, so if you want to load this getallnote, then we have to use the path like home/nodes. Okay, home/node, then it will load this getallnotes component as a child, and this home component as well. Means both components will show at a time. Okay, so in the home component, getallnotes component, okay, we need to call API in this component. Okay, so need to call API in this component. Which component? Which API? Get all nodes component. Okay, we need to call get all nodes component in this API. Okay, so in this component, so I will put here get all nodes component, get all nodes function. Okay, this function I have to call automatically. Okay, so I called from this ng on init. Okay, now we have to read about this ng on init. Why we are calling here, and what is the functionality of this mechanism of this ng on init. I need to call this function, so I call from this inside this ng on init. So whenever this get all nodes component will get load, it will call this function automatically. Okay, log call API here. Okay, and it will call when page is loaded. Okay, so this call API here, it will so API integration we have to do here. Okay, you understood? Hello. Yes. 163 batch. Okay. Yes, sir. Yes. Now we check here. Okay. So need to call API in this component and get all nodes component. Okay. Next. Now there is a one create node component is there. Okay. So we have to use that selector of this component in the get all nodes component. So it will show automatically here. Okay. So I am just removing this one.
You know about selector, what it does, what is the use of this, right? Hello? Anyone don't know about selector? Anyone is there? So who is not used it? All of you know about this? Yes. Yes, sir. Okay, थोड़ा थोड़ा बात करो, नहीं तो मैं क्या सिखा रहा हूँ मुझे भी नहीं समझ में आएगा. Okay. So I have to show like this. Okay, so this is the display component. Okay, and this is a create node component. Both are showing at a time. Okay, so I created one common component for both. Okay, for this create node and display node, and I have redirected on that one. Okay, and I used selectors of this take node and display nodes in the that common component, which is this get all node. Okay, in the HTML here I show you. Yeah, see. Okay, so whatever design is here, okay, I will change here some things. Uh, Again, one view title. Description. Description. Sales. 400 pixel. Height. And display notes. We also here use but this view. So this thing we use again one more thing or this or title. Second one is for picture. Let's see how it is looking now. Oh, चला गया वो तो. Okay, so we'll check this how it is looking on the browser. Where's the browser? Yeah. Okay, mat card is not a non-element. Okay, so we need to import it in the mat model app.model.ts file. The mat card module. Mat card module. Okay. Next. Okay. See, so this is the title and description.
on the top. It is not looking proper. So this is the height and width of there. In the display notes, style width 40 pixel, height, max height of width. Sorry, height 500 pixel, mean height 150 pixel. So it will looks like this. Okay, now in the getallnote, okay, after the calling this getall API, you will get the some data. Okay, you will get in the response, you will get some data which format is in array. Okay, so note list. Okay, this note list is an array type of variable I declare here. Okay, so I'm creating one array as well. Start note list. Okay, this. Enter. Enter. First item. First description. So I'm copying this whole thing. Creating here hard-coded array, okay? But we have to use here whatever is response from server side, okay? Hello? Hello? Yes, sir. So whenever you call here API, in the response you will get this array, okay? This array you will get from there, okay? So just assign to this note list, okay? Now what I have to do, I have to print this note list on the screen, okay? So I need to share this data from and what this design is. This design is this title and description. It is in the this display notes, okay? So display note is the some relation is there between them, okay? So whenever we are using someone's selector inside the another component, that time this component is child, okay, and this get all nodes is the parent, okay. Yes. Understood who is the parent and who is the child? Yes. Yes. Yes, sir. ओके सो जिसका सेलेक्टर यूज किया होगा वो होता है चाइल्ड एंड जिस कंपोनेंट के अंदर यूज किया होगा वो होता है पेरेंट. ओके तो यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट्स चाइल्ड है इसके इस गेट ऑल नोड्स कंपोनेंट्स के. ओके सो गंगा, हर्षवर्धन एंड प्रतीक थोड़ा अभी फोकस करो, ठीक है? आप भी सब लोग अभी फोकस करो, ठीक है? नाउ this create node component and display nodes component. What is the relation between these two? So firstly we create, then it will display, no? Sorry. Yes. Firstly we will create, then only it will display. Yes. First we will create, but currently I have some array. I have to show this array. Okay? Yes, sir.
This is the one array, and already I have. So you have to call here API. I am not calling that one API. You have to call backend API here. We'll get the response. In that response, there is a one array which is already created nodes are there. Yes, sir. Okay. So these nodes I have to print on the screen. Okay. Which is that design is created in this display nodes. Okay. And I need to share this array, this node list array to this display nodes. Okay. So what is the relation between these two components? This display nodes is the child of this create node, this get all nodes. Okay. Yes. So we have to use their child to parent mechanism for sharing the data. So I'm sharing this link with you, all of you. Let's refer this. Yes, you can, Manisha, you can talk. Just refer this, how it is working now. Okay, so see, there are 4 types in Angular. We can share data between components. Okay, first is parent to child, child to parent, and unrelated components. So there are 2 ways from child to parent using one output decorator and using event emitter. Okay, and another one is view child. Okay, so currently which is required for we are working on parent to child relation only currently. Why? Because we have to share data from get all nodes to their childs. Okay, so can anyone tell me what is the relation between this create node and this display node? These both components, what are the relation between them? These are the Sir, they both are the child of getall nodes. Right, they are the child of get all nodes, and you Get all can call their siblings. Okay, it is correct. Yes. But we can say they are siblings. They are siblings. Okay, another one. Yes. Okay, now I have to. Where is that accounts component? ये इम्पोर्टेंट है. ओके, कि कौन सा चाइल्ड है कौन सा पेरेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए. ओके, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा पेरेंट कंपोनेंट है कौन सा चाइल्ड कंपोनेंट है. एक बात बताओ कि यहाँ पे पेरेंट कौन सा है और चाइल्ड कौन सा है. नाउ सर ऐप आइकन्स चाइल्ड है और डिस्प्ले नोट पेरेंट. करेक्ट. ओके, एंड हियर App icon child. Then app icon is parent and the create node is fine. थोड़ा थोड़ा लाउडली बोलो ना. अंकिता अंकिता बात कर रही है ना. App icon is the child and the create node is like the parent. Right, correct. Create node is not create node and app is a child. Right, correct. So you understood what is the relation, means how we have to identify the relation between components, how it is just only using these selectors. Means जिसका भी selector use हुआ होगा वो होता है child, and जिसमें use किया होता है वो होता है parent. That's it. Okay. Yes. Okay. Now अभी अगर हमें क्या ये मैकेनिज्म क्यों है, मतलब कि अभी हम ये डेटा शेयरिंग क्यों कर रहे हैं? What is the reason behind that? Why we are sharing the data? To get display that. No. Single page application है इसलिए. Sorry. Repeat again. सिंगल पेज एप्लीकेशन है इसलिए मतलब सिंगल पेज पे लोड होना. देखो वो सिंगल पेज तो ये कब होता है, ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है. ओके, ये एक बार लोड हो गया. ओके, ये लोड होने के बाद जस्ट ओनली ये ऐप रूट मतलब कि अपना ऐप कंपोनेंट होता है ये वाला. ये 4 फाइल्स राइट. तो इसके अंदर हमने ये राउटर आउटलेट यूज किया है, तो ये डायनेमिकली जब भी जो भी रूट मिलेगा वो यही से रिटर्न करेगा. अच्छा, ये हो गया सिंगल पेज एप्लीकेशन.
मतलब कि इसका मैकेनिज्म, ये बार बार आपका सर्वर हीट नहीं करता, बस वो डायनेमिकली मतलब कि इंटरनली ये रिडायरेक्ट करता है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। वो बार बार एपीआई मतलब जिस रेस्टफुल एपीआई कॉल करता है और खुद का सर्वर एक ही बार कॉल करता है स्टार्ट में, बाद में कभी भी नहीं करता वो। ओके, तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि हम क्यों ये मतलब ये डेटा शेयरिंग वाला पार्ट ये क्यों आया है यहाँ पे, ये क्यों करना है हमें ये वाला पार्ट। ये चार मेथड से पैरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पैरेंट, चाइल्ड टू पैरेंट एंड अनरिलेटेड कंपोनेंट्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। मैं ऐसे भी कर सकता था ना, यहाँ पे अगर मुझे नोट्स प्रिंट करवाने हैं, मैं यहाँ पे गेट ऑल नोट्स कर दिया, ओके, यही नोट्स में यहाँ पे प्रिंट कर सकता था डायरेक्टली। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता ऐसे, यहाँ पे एनजी फॉर सर लगा दो, यहाँ पे कर सकता हूँ ना मैं, क्यों नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इनहेरिट कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी। नहीं लेंथी क्यों होगा, कुछ भी लेंथी नहीं होगी। देखो मुझे मेरा पर्पस मतलब मेन एम क्या है कि मुझे नोट्स इस तरह से प्रिंट करने हैं, ओके, स्क्रीन पे। दैट्स ओनली दैट इज द रीजन। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो नोट है ये यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे नोट्स मतलब कि गेट ऑल नोट्स को रिडायरेक्ट किया ऑलरेडी। ओके, मैं ये ऐप ये जो है ये नहीं यूज करूंगा, ठीक है। ये डिस्प्ले वाला अभी के लिए तो डिस्प्ले वाला, ठीक है, मुझे ये यूज नहीं करना है। मैं क्या करूंगा डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे एपीआई कॉल किया, ये नोट लिस्ट मिली मुझे, ओके। ये मिलने के बाद मतलब यहाँ पे एरे मिला, मैं यहाँ पे एनजी फॉर लगा देता हूँ अभी, शिफ्ट स्टार जी फॉर इक्वल टू लेट नोट ऑफ ऑफ या इन्हें, ओके, पहले तो बोलिए वो इसी से प्रिंट करवाते हूँ। ये तो पता होगा आपको, ये क्या है, ये करली ब्रेसेस क्या है ये, anyone know about this? इंटरपोलेशन। राइट, ये क्या करता है काम। बताओ बताओ, सही झूठ नहीं है, मतलब आप सही बता रहे हो, इंटरपोलेशन ही है, ये काम क्या करता है। सर डेटा बाइंडिंग का काम करता है। राइट, फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ डेटा बाइंडिंग करता है वो, कौन सा टाइप का। लाइक HTML to TS, सर हाँ, TS to HTML, HTML to वन वे डेटा TS, बाइंडिंग। कहाँ से कहा। TS वन वे डेटा बाइंडिंग होता है सर। हाँ वन वे तो होता है, HTML, लेकिन कहाँ से कहाँ बोल रहा मैं। TS to HTML सर। लाइक राइट उसको अपन TS में डिक्लेयर करते हैं। राइट, सो वी कैन कॉल, ओके, सो सी ओके, ये से क्या हुआ, ठीक है, हम इससे कलर भी देते हैं, कलर किसी कलर देते, बैकग्राउंड ना, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, मार्जिन भी राइट लेफ्ट, सॉरी राइट वाली मार्जिन ने दी। ओके, अब ये कैसे हो रहा है देखो, ये अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं, एक एक अलग अलग। ओके, सो अभी क्या करना था मुझे वो, ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है। ओके, अभी मैंने तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, मेरा मेरा काम तो हो गया ना, राइट। ये क्रिएट नोट का भी कर देता है इसी तरह से, कलर देता है उससे बैकग्राउंड का थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बैकग्राउंड कलर, ये यहाँ तक है। ओके, ये वाला देखो, तो यहाँ पे मैं बॉटम मार्जिन, बॉटम पूरे मार्जिन की बॉटम में होते हैं, 3 पिक्सल,
ठीक, तो मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, वो जो भी डेटा है मेरा ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, अभी अभी जरूरत है क्या मुझे वो डिस्प्ले नोट्स की? ये डिस्प्ले नोट तो यूज भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, फिर भी डेटा प्रिंट हो रहा है ना। तो यहाँ पे आया, यहाँ से तुरंत मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले नोट अलग से क्यों यूज कर रहे हैं, एंड ये डेटा शेयरिंग वगैरह वगैरह क्यों कर रहे हैं, वाई? आपने कुछ प्लस अभी ऑब्जर्व किया लाइक है एज अ पेरेंट क्या? बोलो बोलो। सर, अभी जो है ना लाइक सभी एज ए पेरेंट काम कर रहे हैं, लाइक इसलिए नहीं 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 नहीं, सभी विजिबल है हम कि पेरेंट हमें एंड पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड। रिलेशन यूज हाँ। क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एक दूसरे का सेलेक्टर यहाँ उधर उधर क्यों लगाते हैं? व्हाट इज द रीजन? मेन रीजन इज कोड रीयूजेबिलिटी। ओके, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए उसकी इधर उधर। देखो यहाँ पे मैं अभी दिखाता आपको डिलीट नोट। ओके, देखो अभी इन ट्रैश नोट, ये नोट भी सेम दिख रहा है जैसे यहाँ पे है। यस सर। कुछ चेंज है इसमें और इसमें, जस्ट यहाँ पे आइकॉन्स अलग है, राइट? बाकी तो सेम है, ठीक है, वो आप पे जाने दो। ये आर्काइव वाला है, ये तो सेम है, लाइक दिस, सेम टू सेम है, कुछ अलग है यहाँ पे और वहाँ पे आर्काइव वाला। देखो ये सब सेम दिख रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर्स में अभी देखो यहाँ पे टेक नोट है यहाँ पे, राइट? ये टेक नोट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब ये नोट्स में भी है और रिमाइंडर्स में भी। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी सेम सेम नोट प्रिंट हो रही है यहाँ पे, राइट? अभी यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करता, अभी ये लेबल ऐड नहीं किया। ओके, यहाँ पर भी वो सेम नोट प्रिंट हो रही है जो यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला कुछ अलग दिख रहा है, ये छोड़ दो, ये अलग है। ये लेबल वाला दिख रहे हो ना, ये अलग होता है, लेकिन इसका डिजाइन डिजाइन इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, मतलब 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये 5 टाइम यूज किया है। कौन सा? ये सेम नोट, मतलब ये वाला। ओके, ये 2 बार यूज किया है, ये क्रिएट नोट इतना वाला। कहाँ पे? रिमाइंडर में भी 1 बार यूज किया है, यहाँ पर भी। ओके, तो अगर मुझे इस तरह से डिजाइन करना होता हर एक, मतलब अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं ट्रैश वाला कंपोनेंट है, गेट ट्रैश लोड करूंगा, उसके अंदर भी मुझे फिर से जो मैंने इस गेट ऑल नोट्स के HTML में जो कोड लिखा था ये वाला, ये फिर से लिखना पड़ता है यहाँ पर भी। कहाँ पे? इस ट्रैश कंपोनेंट के अंदर। फिर आर्काइव के अंदर भी ये कोड रिपीट करना पड़ता। कौन सा वाला? ये वाला, इतना, क्योंकि वो फिर से मुझे नोट्स प्रिंट करने हैं ना मल्टीपल टाइम्स। अगर मैं फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लेबल्स बाय लेबल्स, यहाँ पर भी फिर एक बार ये पूरा का पूरा ये कोड फिर से रिपीट करना पड़ता। मतलब मुझे ये जो कोड है ये कितनी बार रिपीट करना पड़ता? 5 बार। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू राइट दैट code? 5 times. Okay, so we are just making one component which is reusable, okay, which is called this display node, and this whole thing I have added there. Okay, so this functionality means whatever is the functionalities are here, we are just stop here. And just I will remove this. Now I'm just removing it. Okay, go. Now when I click on trash, okay, it is redirecting on trash, or this is archive. Okay, we are redirecting on archive. So we'll create one more component here. Name is get all archive. Okay, get all archive. Okay. Then get all nodes, trash node, get all trash node. Okay, get all trash node किया, ठीक है। अब ये 2 कंपोनेंट्स हुए, राइट? अभी मुझे क्या करना है कि इस ट्रैश, जब मैं यहाँ पे इस ट्रैश को क्लिक करूंगा तो मुझे क्या करना है? रिडायरेक्ट करना है इस ट्रैश नोड पे। मतलब अभी गेट ऑल नोड्स था तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
ये जो नया कंपोनेंट बनाया ना मैंने, ये गेट ऑल ट्रैश किधर है, यहाँ पे क्रिएट हुआ कि नहीं, हाँ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट करना है, ओके। तो मैं क्या करता है यहाँ पे, वो इससे ऐड कर देता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रैश लिखूंगा, इसे चाइल्ड राउटिंग बोलते हैं। इफ एनीवन नॉट डन देन यू कैन डू आफ्टर द क्रिएटिंग दिस ऑल कंपोनेंट्स, ओके। और यहाँ पे गेट ऑल नोड्स की जगह पे मैं किसे लोड करूंगा, गेट ऑल ट्रैश नोड्स कंपोनेंट, ओके। इसे लोड किया है यहाँ पे। और ये कब करना चाहिए, जब मैं इस ट्रैश पे क्लिक करूंगा तब। तो ये कहाँ पे लिखा है मैंने, ट्रैश यहाँ पे लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा किसे लिखते हैं इसे, ट्रैश, चलता है कि ये ट्रैश पे ट्रैश ही लिखा है ना, लेकिन ट्रैश ही लिखा। Okay, so when I click on trash, okay, got it? ये यहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ Yes, ट्रैश, sir. ओके। एंड यहाँ पे नोट्स है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर होम के अंदर यहाँ पे डॉट के अंदर में डायरेक्टली स्लैश नोट्स डाल देता, ठीक है। यहाँ पे स्लैश रिमाइंडर, रिमाइंडर आपने रिमाइंडर्स किया है क्या बैकएंड में, 163 बैच? Yes, sir. Yes. एंड आर्काइव, जब मैं आर्काइव पे क्लिक करूंगा तो गेट ऑल आर्काइव कॉल होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे राउटिंग दूंगा उसका, आर्काइव वाला राउटिंग यहाँ पे। कंपोनेंट यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे हमने इस गेट ऑल नोड्स कंपोनेंट के अंदर एपीआई कौन सा कॉल किया था, गेट ऑल नोड्स। यहाँ पे क्या कौन सा एपीआई कॉल करोगे, जो ट्रैश नोड्स होंगे वो कॉल करोगे यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर। एंड इस आर्काइव के अंदर क्या करोगे, गेट ऑल आर्काइव कंपोनेंट एपीआई कॉल करोगे। एंड जो आर्काइव नोट होंगे वो आपको मतलब कि गेट करना है, गेट, ओके। अभी ये देखो यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, अभी जहाँ भी चाहिए वहां पे देखो, मैं इस नोट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आया, आर्काइव पे क्लिक करता हूँ तो आर्काइव दिखाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा, ओके। अभी यहाँ पे एक ही नोट प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी इस गेट ऑल नोट्स के अंदर, किधर गया गेट ऑल नोट्स, यस, यहाँ से ये नोट मुझे क्या करना है, अभी पास करना है किसी भी डिस्प्ले पे, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये सेम थिंग मैं ये जो किया है ना आपने यहाँ पे देखो, कि मैं ये ऐसे ही होगा कि इसके अंदर इस गेट ऑल ट्रैश के अंदर, यहाँ पे ये मैं डिक्लेयर कर देता हूँ सेम चीज इक्वल टू एम्पेयर है, और ये इज डॉट गेट ऑल नोट्स, गेट ऑल कौन सा, ये ट्रैश नोट है ना, ट्रैश नोट, गेट ऑल ट्रैश नोट यहाँ पे एपीआई कॉल होगा, ओके। ये जो लिखा है मैंने एपीआई कॉल, यहाँ पे आपको एपीआई कॉल करना है, देन आपको ये लिस्ट मिलेगी, ओके। लेकिन मैंने ये सब हार्ड कोडेड लिखा है अभी के लिए, ठीक है। तो आपको ये हार्ड कोडेड नहीं करना है, ये आपको एपीआई कॉल करना है पहले, देन प्रिंट करना है, ओके। Yes, सेम sir. थिंग में आर्काइव के अंदर, Can you say that once again? don't do hard coded. First of all, you have to call your API, okay. In the API response, you will get this array from backend. Whatever you created that nodes you will get here, okay. And then that nodes you have to print on the screen. Okay, same thing I will do in the here. So node list here as empty, okay. And instead of this trash, I will make here archive.
We start archive notes. Okay. Get all archive notes. We will calling here get all archive, get all archive. Yeah, there are. Okay. Now, when I click on this trash, okay, whenever we click on trash, get all archive notes, we have to use this display notes selector on that all components. Okay, so we are using this display selector how many times in the archive as well. Okay. Whatever things are there, and also in trash as well. Here, two times. Currently, we are using two times. Okay. So this whatever is the functionalities are here, and this code we are reusing, right? So for reuse the code, we are using these four methods, data sharing methods for that main reason. Okay, so let's do from get all nodes. So get all nodes is the parent component, get all archive is the parent component, and get all trash nodes is also archive parent component. Okay, and we are using child selector there. This is the selector of this child component. Their name is this. See, here is the app child. So this is the selector of child we are using here. Okay, so just copy this inner part from the child selector. Okay, here paste it in display. Oh, sorry, in the all getter nodes here. Okay, just paste it here. Okay, so in the note list, our data is in this variable, note list variable. So that note list, instead of this parent message, we have to share from parent to child. Okay, so this child message is the now this note list. It contains this note list. Means multiple objects are in this child message. Okay, so in the child we have to import this input parameter here. This is called output input decorator. Okay, so we have to import it in as a core module. Okay, and make here any type of this. Okay. And this child message we will console or $ng for okay, let note of child message. Okay, so whatever we shared from this child message, this is imported in display notes component here as the input. Okay, and this child message is used in the HTML here. Okay, so what it contains, ng for is iterating that data which is contained in this child message. So child message is the array. Okay, 1 minute. Hello. Yes. बरोबर.
Okay, now let's see. We are changing that name of that getallnote here. Okay, instead of this child message, will give here notes array. Just we are changing the name. Okay, notes array. Let's copy this and replace it in display note. First of all, we have to replace here. And why are making here any type of? Because we are sending array from there. Okay. So array and change this child message also here. So notes array. So whatever are the notes are, that notes are here. Okay. So we change. So note dot title note dot description. We print that all notes whatever we shared. Okay. Now let's see how it is looking. सब गया. Okay. आ गए फिर से नोट्स. सो हमने अभी कहाँ से प्रिंट किए? वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग फ्रॉम डिस्प्ले नोट्स. ओके, सो इट इज इंटीग्रेटेड इन दिस गेट ऑल नोट्स. ओके, नाउ एज लाइक सेम whatever we did in this get all nodes. Okay, same thing we are doing here also. Okay, just copy this and put it in trash note as well. Okay, and also in archive as well. Okay. Now let's see. When we click on this archive now trash, it is showing that all nodes, right? It is different, but it is not showing that create note here. Okay, just only showing this all nodes. Okay, when I click on archive, it is showing that same thing. When I click on again taken on all nodes, it is showing this create node. This is the create node. Okay, this color of this is the node of create node, and these are the normal nodes. Okay, so you understood how to share from parent to child? Yes. Anyone have any doubt? You can ask frankly. Okay, I know you will not understand directly at the first time. Okay, so you can ask small questions also, no problem. देखो, रिपीट करने से बेटर है कि अभी पूछो. ओके, रिपीट तो करूंगा मैं अगर अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम आया तो, अदरवाइज नहीं. पायल, अंकिता. सर पूरा समझ Yes. नहीं आया, पर हाँ आधा आधा आया है. पेरेंट चाइल्ड आ गया, सिलेक्टर कैसे यूज करना है, राउट कैसे कर रहे हैं वो समझ आ गया, बट ये नोट्स गेट ऑल आर्काइव ये कैसे हो रहा है वो कम समझ में आ रहा है. ओके ओके ओके, अभी के लिए ना ये सोचो मत. मैंने ये क्यों दिखाया था आपको, ये गेट ऑल आर्काइव गेट ऑल ट्रैश, बिकॉज अब आपको समझ आए कि हम ये डेटा शेयरिंग क्यों कर रहे हैं. ओके, डेटा शेयरिंग क्यों कर रहे हैं? रीयूज करने के लिए कर रहे हैं उसको. राइट, डेटा शेयरिंग यूज क्यों करना है? क्योंकि हमें डेटा वन कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट के अंदर हमें डेटा शेयर करना है, फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट. लेकिन ये डेटा एक्चुअली शेयर क्यों करना है? क्योंकि हमें वो कंपोनेंट रीयूज करना है, कंपोनेंट का कोड रीयूज करना है, इसीलिए हमें डेटा शेयर करना पड़ता है. अदरवाइज वी आर नॉट शेयरिंग डेटा. यस. Okay, so don't think about that too much about get all trash and get all these two things. Just think about this get all nodes, display nodes, and create node. Okay, just only three components important are there currently. Yes. Yes. Just do this get all archive and get trash later on. Okay, Yes. but we get all nodes and create nodes and display nodes. It is important. First of all, you have to design properly this create node, call the API create node, then call the get all nodes API here, and then display that display nodes in the display nodes. Okay. Okay, sir. Anyone else? Ashwini, you understood?
Yes, sir. You So can what ask is this hard-coded note? auth code. Yes, sir. No, sir, I don't know. Hard-coded note, something. Auth code notes. I not Uh, understand. in get all notes, TS. The get all सर notes. एरे कुछ लिखे थे सर आपने वो वाले Yes, this one. Okay, this one. Okay, let's see. Here, you have to call here API. Okay, you have to call Yes, here sir. API. Which API? Get all notes. In the API, you have API that get all notes API in the Yes, sir. backend. Okay. Yes, sir. Once Yes. you call in the response, you will get the array. Don't think about this one. Okay. Okay. Don't think about this. Just tell me. Now here you have to call the API. Okay. Up in the response, you will get the array. Okay. Yes, sir. Then that array we have to just assign to this note list variable. This array is get from the backend only. Don't do the hard coded there anything. First of all, you have to call the API in the subscribe. Inside the subscribe, you have to do this thing. Okay. 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 For example, in the response, you will get here response dot data dot data. In the data, you will get that array. Okay. Just only this one line is required there. Maybe not fixed. This data may not be fixed. Okay, and this response may not be fixed. Maybe here you are declare result as a result like that. Okay, I will show. There is the login in the login. Okay, here also I have not called API. Okay, in the registration I have not called any API, you guys. Okay, I think you are already called APIs now in the login. So in there is a one dot subscribe is there after the calling API. Yes, sir. Right? In the Yes, sir. you are written here like response in here like this. You did it like this, and here is some service. Yes. You are called some services here. Am I right? So Yes, sir. when you have to say you have to do same thing like this. We get all notes as well here. Okay, and this inside that inside the subscribe. So in the response dot data, maybe this variable name is should be different, but commonly it is the data. Commonly means who are means good backend developers. So in the data, I will get that data. Maybe here then details or array of nodes, whatever you do the name in the backend, that will get there. Okay. Maybe this one is different. You have to first of all console.log response. Okay. First of all, call this response, and then we have to assign this one. Okay. Yes. Yes. So currently, yes, hard coded. I have written there hard code array. You have to don't write that hard coded array there. Okay. So this is coming from backend only. Yes. Yes. Anyone else have an issue? Pratik, Ganga Devi, and Harshvardhan. What about you? It's All of you got plus two? No, sir. yes. थोड़ा बचा Yes. Okay. You have to first try it out, then you will get the understanding. Okay. Ganga, Yes. you are not there. Yes. Hello, Ganga. हेलो गंगा। अरे यार ये क्या है, मैं एब्सेंट ही रहा हूँ इसका काम।
या हाँ प्रतीक, आपका बैच कौन सा है? व्हाट इज द बैच नंबर? 153. Sir, Ganga is not in our batch. Okay, then where is that? What is the batch number for her? Sir, don't know. She is a full stack, I think. Okay, full stack है क्या? फिर कौन सा बैच? ठीक है, देखता हूँ क्या कहाँ पे नाम है उसका. Okay, so other than that, you understood? Anyone have any issue? Yes, any doubt? No. हेलो Yes, Shubham. सर, वो जो प्रेजेंट दिख रहे थे उसमें मेरे सिर्फ 10% दिख रही है. मैं हर दिन प्रेजेंट हूँ सर. अरे नहीं, यहाँ का नहीं, वो पहला भी होगा ना. देखो कहाँ पे दिखा रहा है देखो. अभी 162 163. शुभम ठाकरे. हाँ राइट. या इस बैच को कब ज्वाइन किया आपने? ये बैच 163 है शायद, पर उसमें 162 में भी मेरा नाम है, रीमैप हुआ था. अच्छा 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 163 में होगा फिर अच्छे से. यहाँ पे शुभम ठाकरे दिखा रहा है ना 100%. वो उसमें भी नाम आया था. हाँ फिर यहाँ पे नाम है तो वो नाम निकाला नहीं शायद उन्होंने. सर मेरा 95 क्यों है सर? मैं तो हर रोज प्रेजेंट हूँ. क्या? मेरा 95% दिखा रहा है. कौन है? कौन बोल रहे हैं? अंकित मानकर. अंकित सर मेरा सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे. ऑलमोस्ट मैंने सारे दिन अटेंड किया, एक भी दिन Yes, sir. Me also. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पर भी अंकित आपका तो एब्सेंटी है ही नहीं. 95%. हाँ फिर भी वो 95% दिखा रहा है. पता नहीं अभी क्यों दिखा रहा है. ओके सो अभी दिखा था आज कितना 18/5. सॉरी, यहाँ पे कब ज्वाइन हुए आप? लास्ट मंडे राइट? Yes, sir. आप 30 है राइट? इसके बीच में देखो, मैं अभी आपके सामने लगा था, यहाँ पे तो मुझे कहीं दिखा रहा है. अभी ये देखो, ये पहले वाला पता नहीं मुझे, ये 23 से आगे हो आप. तो यहाँ पे तो मुझे, मैंने सब जब भी प्रेजेंट हो अब लगाया है. हाँ 31 का बाकी है शायद, मानकर का ही लगाया है. फिर शुभम ठाकरे का आज का अटेंडेंस लगाया शायद, इसलिए वो 95% दिखा रहा है सभी. अच्छा. 5 लोगों का. गणेश गायकवाड़ इज प्रेजेंट. ये कौन है? पायल. देन अंकिता इज. Yes, sir. देन अक्षता साबळे. ये कौन है? अक्षता सुधीर. सर सेम ही है वो. मतलब अक्षता साबळे और अक्षता सुधीर सेम है. ऐसा उस दिन बोली थी ना सर मैं. यहाँ पे ये उनको बोलो रिमूव करने के लिए. फिर ये 2 बार नाम दिखा रहा है आपका. अक्षता सुधीर एक है और अक्षता साबळे एक है. अच्छा सर, मुझे नहीं पता सर. ओके, ये साबळे आप नहीं हो ना? सर मैं अक्षता नहीं हूँ, मैं अंकिता हूँ सर. मैं वो एब्सेंट है. अक्षता आज एब्सेंट है ना? यस सर. ओके तो वो बताओ ना, ये बताओ दे. एब्सेंट है ना अक्षता? ठीक है तो अंकिता का तो लगाया ना आप? अंकिता मानकर, सॉरी अंकित मानकर सर. अंकिता रघुवंशी. सर प्रेजेंट. हाँ ओके. अक्षता यहाँ पे नहीं शायद, वो 62 में है. कौन पेंडिंग है क्या? 163 162 बैच में कोई है एब्सेंटी वाला, मतलब जिसका नाम नहीं लिया वो? सर माय नेम अश्विन. 162 सर. हाँ ये क्या हुआ? इसका अटेंडेंस है मार्क. ओके विशाल इज देयर. विशाल आप मेरी कब भी से लगे एब्सेंट हो? नहीं लग रहा है. एब्सेंट नहीं सर, मैं तो प्रेजेंट हूँ. फ्राइडे का भी नहीं लगा है मेरे को लग रहा है. फ्राइडे सैटरडे का नहीं लगा है, मंडे का नहीं.
हाँ कल सर से हॉलीडे सैटरडे को रिव्यू दिया? दिया सर, सब दिन प्रेजेंट था सर। ठीक है। वो पीछे वाले में भी मेरे को लग रहा है नहीं डाले। नहीं, ये इस बीच में आप 18 17 के बाद 17 डेट के बाद आप टू द 30 23 क्या कर रहे थे? इस 4-5 दिन, ये 3 दिन 4 दिन सर प्रेजेंट तो था सर मैं, लेकिन यहाँ पे नहीं थे, वहां पे उस साइड में थे, मतलब बैकएंड में थे शायद आप। अच्छा हाँ टाइम हाँ लगा सर, था ना। हमारा तो लिया ही नहीं सर कुछ। हाँ, लेकिन ज्वाइन हो रहे थे क्या उस दिन, उस टाइम में? नहीं नहीं, खत्म हो गया था सभी हमारा। का बोला ही absentee? नहीं था मैडम ने बोला ही नहीं था डालने को, मतलब ज्वाइनिंग नहीं बोली थी मैम। ठीक है ठीक है। यहाँ पे अक्षता सावंत करके था एक, वो रिमूव हुआ शायद। अक्षता का ऐसा है, अक्षता की था स्टूडेंट का। तुषार आनंद का absentee लगाया मैंने, देखो कितना गड़बड़ कर दिया है। देखो प्रेजेंट में एक बार लेता फिर से। अंकित यस मानकर प्रेजेंट, राइट? पायल प्रेजेंट, Present, sir. गणेश इज प्रेजेंट, ओके हेलो सर। यस। सर 1 मिनट, मेरी सीट बताना ना, क्या? मेरी प्रेजेंटी की सीट बताना ना आप। आपकी लगा दी माधुरी ने, ऑलरेडी लगा दी, चेक किया मैंने। ओके सर। हाँ सर कितने परसेंट है मेरी, वो देखना था। 56% है, लेकिन वो पूरा का पूरा काउंट होता है, वो इस पे नहीं डिपेंड करता कि कब से हो। ये हाँ। बैच जब से जनरेट हुआ होता है ना, तब से होता है वो। ओके सर। इम्पोर्टेंट तो होता है कि रेगुलर है या इरेगुलर है। तो रेगुलर सर हुआ तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मैं तो रेगुलर ही हूँ सर। ठीक है। सैटरडे को प्रेजेंट थे आप मधुबाला? हाँ यस सर, यस सर, रिव्यू रिव्यू किया। लिया? हाँ यस सर। क्या पूछा उसमें? उन्होंने उसमें ऑब्जर्वेबल पूछा था सर, डेटा बाइंडिंग पूछा था, और डेकोरेटर्स पूछा था सर। ठीक है। प्रतीक इज प्रेजेंट। ऋषभ को है। प्रियंका सैटरडे को थे आप? यस सर। ओके। सैटरडे को था, मंडे को भी था। हर्षवर्धन, yesterday you are absent, right? Yes, sir. और कौन था absent कल? Hello. Anyone was absent yesterday? किसी का तो मेल आया था मुझे। अंकित मैंने आपका, mail सॉरी किया था। हर्षवर्धन आपका ही था ना? हाँ ओके ओके, आपका ही था। राजेश, ठीक है। थ्री बैच। तुम क्या बोलो, मुझे नहीं समझ में आया। डिसेंट मतलब नहीं समझ में आया। वो जो नहीं सर। नोट का लेबल है ना सर, उसको क्लिक करने के बाद जो नीचे आता ना वो ओके ओके ओके।
Yeah, this part, sir. This section. Okay, so when it is closed, then it is showing. Okay, so guys, here No, you first. can use ng if. Okay, so see, first of all, this is the one first tube. Okay, this take note and this icons. Okay, when click on this take note, click on there. So this is the second div. Okay, this take note and these icons are contained in another div. So we have to just show and hide there using variable ng if is directive there. Using ng if you can do it. ng if sorry, ng if directive. Okay, take variable. You have to define one variable with false state first of all. Okay, and that variable we have to use for this second div. Okay, and Okay. okay, so using ng if we have to use their ng if two times for both divs. One should be the for both time it will be show. Okay, so ng if not and show means like this. Okay, I will show it in a 1 minute. Okay, let's start. Okay. My screen is visible. Yes, sir. Yes. So not show. Okay, what is this show? This show is the variable. The PS file. Just declare here that variable and contains the false state. The false. And same thing I will use for description. Okay, and this contain this board page. How to design? You have to design it. Okay. Now, when I click on this, I will make here one click function. Okay. And for this, right. Oh. So this is the one my function name. I have created the ts file. And from this function, I will change the start show equal to not show. Okay. Now on the screen, I will check it is all working. कॉल नहीं हो रहा है क्यों? तो sorry. Now see. Okay. Now we are showing that one. This our hiding and showing. Okay. So yes, I will remove this background color from. Okay. So for these two views, you have to hide and show. So that height is there, na? That height is not required there. So this height as well. Need the background color. Okay. Let's see. Okay. Understood how to do it. Just we have to using the ng if we have to do it. Okay.
Yes. Yes, you can do Sir, it directly like this as well. On hide also ऐसे तो करते हैं, पता नहीं कैसे करता है ये। करते हैं। इससे भी होता है लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। नहीं हो रहा है। Yes. Hello, sir. Understood, Ashwin? yes, sir. Understood. Sir, if you are adding that icon, then we want to style implement in that app icon HTML page. When I add icon, then Yes, sir. You had added that app icon link, not icon. yes, that is another icon. This is the app icon is the one component. Yes, And yes. We want to style in that component for that icons. yes, you have to add these icons. These icons we have to add there. These 6 icons. Okay. These 6 icons are there. Don't this undo. It is not required, but these 6 icons are required there, and this all store it in this icons component in the icon component here. Sir, your Okay. screen is okay, sir. हेलो सर. Yes. Yes. सर वो जो आइकॉन लिए वो मैट आइकॉन लिए चले क्योंकि इमेज लेना ले उसकी जगह. SVG इमेजेस डाउनलोड करो ना, वो गूगल फॉन्ट के थ्रू मिलता है ना वो. हाँ हाँ वही पूछना था क्योंकि हमने वो मैट आइकॉन यूज किए थे डिजाइन में पिछली बार. आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड हियर एज वेल. देखो ऐसे Okay, करके कुछ तो इंस्पेक्ट करते हैं. ठीक है. स्क्रीन विजिबल नहीं. Screen is not visible. ओके. Yes. मुझे पता नहीं एग्जैक्टली होगा कि नहीं, पता नहीं, लेकिन वी कैन ट्राई इट. ओके. किधर गए हो, कहाँ पे निकल. Okay, now you can inspect this one as well. Okay, so ये जो है ये पूरा एसपी जो है ना, ये एसपीजी ये कॉपी करो. एट्रीब्यूट कैसे करते हैं कॉपी. एलिमेंट ही करते शायद. लेट्स सारा से फोल्डर की तरह यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे फाइल बनाओगे मतलब क्लॉक डॉट इसके अंदर ही पेस्ट करो. अभी ये आइकॉन्स इन दी आइकॉन्स HTML एक इमेज टैग लोगे SRC assets dot SVG. Okay, let's see. Let's check this one not there, may not be. ओके आ गए वो. ठीक है. या तो ये पाथ भी कॉपी करके ये जो आ रहा है ना ये सब ये एसवीजी से ही कॉपी करो. ये पाथ से मत करो. ये एसवीजी पूरा का पूरा होगा. फिर कैसे करना है देखो, यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है. ओके, ये आइकॉन पे क्लिक किया हुआ है. ठीक है, ये आइकॉन यहाँ पे ओपन करो. यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूआरएल करके है, उससे राइट क्लिक करो एंड ओपन इन न्यू टैब. यहाँ पे देखो इसे ओपन होगा. फिर इसे इंस्पेक्ट करो. इंस्पेक्ट होने के बाद यहाँ पे एसवीजी होता है. इसे कॉपी एलिमेंट करो. कॉपी करने के बाद यहाँ पे एसेट फोल्डर में जाओ. यहाँ पे एक फाइल बनाओ. ये क्या था, रिमाइंडर था नहीं, रिमाइंडर कोलैबोरेटर था. कोलैब डॉट एसवीजी बनाओ. इसके अंदर पेस्ट करो एंड फिर आइकॉन्स में और एक इमेज टैग ले लो. देन
बोला बेसिक ये भी आ जाएगा यहाँ पे आ गया you understood how to do it all of Yes, you? sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, then you can use icons as well from Google font and you can use like this as well. Okay. Yes. Okay then guys, I can I drop now? Thank you, sir. Thank you. Bye bye. सर हेलो सर Yes. सर मेरा वो रीसेट पासवर्ड का एक बार देख लो थोड़ा सा मतलब एपीआई का प्रॉब्लम है या कुछ है क्या अभी टाइम नहीं है जस्ट एक बार लुक कर लो सर लुक कर लो सिर्फ एक बार कौन अभी सा मेरी है मीटिंग है 10 मिनट में और मुझे पूरा हाँ सर लैपटॉप रिसेट करना है यार पहले क्यों नहीं बताया मैं कितनी देर से बोल लिंक रहा आ था रही है हाँ सर हम लोग सर आप बोल रहे थे इसलिए अरे लिंक आ रही है पर यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा है वो पास करो ना रीसेट उसमें पासवर्ड ऑथराइजेशन में पास नहीं किया आपने सर्विसेज के अंदर ओके ये ओके जो ओके सर टोकन आया ना वो टोकन लिंक ऊपर वाला लिंक हाँ हाँ ये हाँ टोकन ऑथराइजेशन में पास करो ओके ओके शुभम हाँ और अंकित you can help Vishal for that okay you can stay here for few minutes सर्विसेज में जो है ना यूजर सर्विस उसमें आपको ऑथराइजेशन वो टोकन पास करो